A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis for 24th of November, we see, okay, so यहाँ पे this is the advertisement, Department of Information and Public Relations from the state of Karnataka. So 6 months of illustrious achievements. इसके ऊपर है 60 lakh women benefits every day. 100 crore tickets have been issued to them. So basically travel benefits की बात करें, free bus service for the women across Karnataka as it is in Delhi also, which is helping them in easy commutation. Yuva Nidhi scheme है rupees 3,000 per month for graduates and 1,500 for diplomat holders. So youth के लिए there are beneficial schemes. Anna Bhagya, it is basically regarding the food grains, free food grains 10 kg. So apart from जो central government की PDS scheme hai, apart from this, states are also providing it separately as per the different situations. Then Gruha Jyoti hai, free electricity is provided. Gruha Lakshmi 2,000 per month for female head of the family. So basically cash transfers zyada hain, free benefits are being provided, and here you can see the viewpoints, लोगों को क्या कहना है, स्टूडेंट हो, ऑटो ड्राइवर हो, फार्मर हो, ऑटो ड्राइवर की बात करो तो बेसिकली गृह ज्योति स्कीम के थ्रू इट बेसिकली हेल्प्स the person in educating the children. So indirectly भी benefits हो रहे हैं in terms of education. Then homemaker के लिए क्या benefits है, gives me self confidence. So जब आपको free travel मिलते हैं या even for financial independence जो मिल रही है होम मेकर्स को, सो माइक्रो लेवल पे हाउ दिस कैन ब्रिंग अ बिग बेनिफिट. So Supreme Court again जो issue है between the governors and chief minister. So governor holds no veto power over the bills. So Ben says if governor withholds the assent to a bill, it must be returned to the state legislature as soon as possible. If assembly reenacts it, as recently अभी हमने तमिलनाडु केस में देखा, so then the governor must give the note. Must give, कोई option, कोई choice नहीं है, आप उसको withhold नहीं कर सकते हो. So ultimate decision on whether or not to accept the advice of the governor belongs to the legislature alone. So ultimate decision taking power is it lies with the legislature and not with the governor. So Article 200, Article 163, these have been discussed. So tunnel rescue delayed as drill machine hits the hurdle. So because of some problems in the drill machine, now you can imagine कि इतनी critical situation में we have to basically face such kind of technical problems. So otherwise this it might seem to be a minor, इतनी बड़ी problem नहीं लगेगी, but ऐसी critical situation में this becomes a very big hurdle when every second counts. And again the delay has rescue has been delayed by one more night. So metallic object की वजह से machine encountered a metallic object and hence pushing the pipe stopped. So this was the hurdle. So let's see now how this is going to be tackled. So obstacle was struck. National Highways Infrastructure Development Corporation is building the tunnel, had drilled horizontally through about 45 meters of the debris. Silkyara tunnel completed about 70% of the distance to the workers. So only 30% is left. So let's see if we are successful and able to rescue them today. So Lashkar-e-Taiba's commander accomplice killed in Jammu and Kashmir encounter. Highly trained commando is there. So internal security के perspective से हम बात करते तो we need to know about the names of these terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba. And apart from this, Rajouri or Poonch belt में these are more affected belts in Jammu and Kashmir region. And basically training camps are terrorist training camps which are closely located to the India-Pakistan international border in the Pakistan territory. So wahan se they infiltrate into Indian territory, and it is also there on the Pakistan and Afghan front. So they are trained, and obviously training ke liye they also require finances in huge amount. So वो basically उनको secure होते through
हवाला ट्रेडिंग, जिसमें वी से की फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इज नॉट रिक्वायर्ड. तो दैट्स हाउ इट कीप्स द सिस्टम अनोनिमस, आइडेंटिटी भी अनोनिमस रहती है, एंड देयर आर मल्टीपल लेयर्स. तो उसको एग्जैक्टली सोर्स को ट्रेस करना बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट. एंड प्लस जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, हाउ अनएथिकली दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर सच पर्पसेस, सो दैट आल्सो मेक्स इट अ डिफिकल्ट चैलेंज. यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड वन फैक्ट. जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है वो लोकेशन है कालाकोट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में. तो वो फेमस है कोल माइंस के लिए. एंड नॉर्दर्न इंडिया में जो पहला थर्मल पावर प्लांट था वो कालाकोट में ही इस्टेब्लिश हुआ था. Okay, thank you so much, Karuna, for the important addition. Then WHO asked China for more information on rise in illnesses and pneumonia clusters. So ये current situation की अगर हम बात कर रहे हैं, undiagnosed pneumonia in children in the northern China, such cases have been reported from there. So here अगर हम specifically COVID-19 के context में भी बात करते हैं, तो somewhere it is claimed, obviously this is not like we are not having any proof, जो भी investigations हुई हैं by the WHO and their teams. So it is believed कि the spread started from China. So इसको हम basically biological terrorism के अंदर बात कर सकते हैं. It can be basically how spread of these diseases and viruses, it can be misused for again personal interest by different countries. So यहाँ पे basically this is the update. And knowing कि इसके पीछे reason क्या हो सकता है, that is important. Global infectious disease monitoring service as reporting clusters of undiagnosed pneumonia in children in northern China. So it was unclear whether those were linked to a rise in the respiratory infections reported by the Chinese authorities. So again, अभी proper कोई 100% clarity and transparency नहीं है. Spike in respiratory illnesses in China signaled by the start of a new global outbreak. So we'll have to again इस context में हम ये भी बात कर सकते हैं कि after COVID-19 how are obviously जो हमें lessons मिले हैं after that, how we have basically prepared for future epidemics, because again with the impact of climate change, rising global temperature and humidity, so these types of diseases and their numbers and the chances of increasing and spreading increases more. So वो और speedily exponentially spread हो सकते हैं. So how prepared is our healthcare system to deal with such situations in future? And specifically यहाँ पे it is targeting the children. Okay, so Karuna has one more important update here in terms of fact. This is the second highest cause of infant mortality. So this is in case of India, or you are citing it for the entire world? Yeah, for China. So please confirm on that. In context of India. Okay. So हाँ, अब बोल सकते कि how dire the situation currently, अगर if this is the second highest cause of death of children, of infant mortality, and agar ye diseases ka number, that's how if it spreads in India also, so what would be the situation? तो an update, महादेव ऐप जो हमने बात करी थी, मनी लॉन्ड्रिंग, जो इलीगल बेटिंग हो रही थी, that was we saw कि दुबई में we could trace the sources. So rupees 15,000 crore case linked to the Mahadev app, it has been now transferred to the Mumbai crime branch. So मनी लॉन्ड्रिंग की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली वी सी की ईडी उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बट यहाँ भी स्पेसिफिकली दिस वुड बी डेल्ट बाय द मुंबई क्राइम ब्रांच. So this is again हम बात करें the changing nature of the threats to internal security. So this is one aspect again with the help of apps आज के टाइम में कितनी easily आप create कर सकते हो, and specifically betting के around या gambling जो हो रही है, how even recently that is also brought under the GST net. So उसके बाद we can say कि we can basically trace such illegal apps which have been running.
And this we had already taken up, difference between home guards and the police forces. So here home guard Jawan killed by the Nihangs after the Nihangs, they opened fire in Punjab. So Nihangs, they are members of a Sikh sect. Allegedly, they opened fire. And this was over the ownership of Gurdwara, Akar Bunga at Sultanpur Lodi, Kapurthala. So Nihangs, basically they have, जो उनके पास weaponry रहती है, again that is for in context of the religious practices and the beliefs of Sikhism, but how you can see कि even that is somehow end up being misused in few cases, as in this case. So they opened fire, so it means they were also having weaponry like guns also. So Mirabai, we took up it yesterday. She's a 16th century Bhakti saint who was popular for her beliefs and ideas in Gujarat and Rajasthan. So she's a unique example of pure devotion. She was a Krishna Bhakt and pure devotion and faith, says the Prime Minister in Mathura. So he's there. And so 525th birth anniversary of the poet and a Krishna devotee. So she was a poet as well. And we know again Mathura, Krishna Janma Bhoomi. So pride in heritage. So we have taken the pledge of Panch Pran लिए गए थे from the Red Fort, and we're moving ahead with the feeling of pride for our heritage. So she was born in Rajasthan and awakened the consciousness of entire India through her devotion and spirituality. तो मीराबाई से रिलेटेड ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो अभी भी रेलेवेंट है काफी हमारी डे टू डे लाइफ में? हम जब कृष्णा भक्ति की बात कर रहे हैं तो हर आइडियाज एंड जो अगेन हमारे हेरिटेज से रिलेटेड कल्चरल आइडियाज हम प्रैक्टिस करते हैं. सो लाइक when we talk about this stressful world, जो हमारे पास स्ट्रेसेस है, किसी भी टाइप की स्ट्रेस हो, सो उसको काम डाउन करने में हाउ इट हर आइडियाज इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. So for that, again, it is important to recognize the importance, and obviously she is more popular, her ideas are more popular in these specific regions. So again, pan-India level pe, her ideas definitely, her methodology, practices, they can be really helpful. So mental health ke context mein, the ideas can prove to be very important for us. Also, in talk about like there are various types of relations between the bhakts and the god. For example, in case of Meera, she considered Krishna as her husband or her lover. तो ये भी एक हम कह सकते हैं. आज जैसे इसी भक्ति काल में कबीर दास भी थे और ऐसे काल हाँ, अगर यहाँ पे आप आज के टाइम में इसको बिल्कुल रिलेट करेंगे विद कृष्णा भक्ति, तो डिफरेंट हाउस होल्ड में अगेन जो रिलेशनशिप है, हाउ यू सी कृष्णा इन योर लाइफ, हाउ बेसिकली व्हाट रोल ही प्लेज लाइक एज अ फादर, ब्रदर, और ऐसे लाइक डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड में वी हैव दैट रिलेशनशिप जो आपको अगेन कहीं ना कहीं पीस देता है. तो क्या हम मीराबाई को एक तरीके से कोट कर सकते हैं कि वो एक साइलेंट रेवोल्यूशनरी थी? साइलेंट रेवोल्यूशनरी तो नहीं बोलेंगे, रेवोल्यूशनरी वुड बी द रॉन्ग वर्ड हियर, because she was a bhakti saint, so you can't call her to be a revolutionary. So choosing the right word with, again, emphasizing on the right sensitivity and associating with what kind and nature of work she was involved into या उनके ideas क्या थे. So can't call her a revolutionary.
but nice क्योंकि question. उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके भी उन्होंने अपना डिवोशन जो है कृष्णा के तरफ वो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो एक तरीके से वो उनकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को भी शोकेस करता है। हाँ, बट रेवोल्यूशनरी नहीं बोल सकते ना आप। जो आप बोल रहे हो ये आपने सही बोला, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू कांट यूज दिस टर्म फॉर हर. ओके। So Shriram Bhartiya Kala Kendra, this we can again remember as a name. So it stages legendary Ram Leela every year. And apart from this, for 55 years, she's been marking her presence. So when you talk about really the contributions, so Shobha Deepak Singh looks back on her fascinating journey with the institute and what it takes to thrive. So she's been again Ustad Amjad Ali Khan presented her with 2023 Sumitra Charat Ram Lifetime Achievement Award. So this is basically award diya jata hai in the memory of her mother for promotion of Indian arts, and she pursued herself to stand up to acknowledge the adulation of the audience, and fire in her was unmissable. So basically again ye jo award diya jata hai, this is for the promotion of Indian arts. And we can also like look at the contributions of Ustad Amjad Ali Khan. So basically, this institution was established in 1952 as a cultural center to impart training in the classical music and dance. So यहाँ पे examples भी have the noted maestros. These can be noted down. ये एग्जांपल ले सकते हैं, मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी. Supreme Court of India makes an inclusive move by welcoming the Mitti Cafe, managed entirely by the persons with disabilities on the court premises. So like we have this again, a dedicated cafe being run by the people, PWD persons. Similarly, even Bombay, maybe we are seeing different cafes, they are being run by the third gender. So as again, as a source of empowerment, how it signifies ki they are also humans. We need to accept them socially as well. So it is basically a sign of, again, you can say, changing perception of the people of the society towards them. So gradually we are seeing such change, but यहाँ पे again dedicated cafes हैं, so they also need to be made a part of the workforce जो बाकी cafes run हो रहे हैं. Why only we are seeing कि अभी cafes are only being run by them? सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, बट अगेन एज अ पार्ट ऑफ जब हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, सो दिस शुड बी एक्सेप्टेबल एट ऑल द लेवल्स ऑफ, जब हम एम्प्लॉयमेंट बात करते हैं किसी भी सेक्टर में. So this is again a great example when we see even CJ has been, he's there, you can see in the picture, he's visiting this cafe, and most of the जो decor है, furniture है, this has been made by persons with disabilities and their caregivers. So Mitti Cafe, I think, कहीं ना कहीं this also reflects the sign of sustainability, how these cafes are being run. जो आप furniture use कर रहे हो, that is environmentally safe. So he also suggested कि ऐसा एक outlet court premises में भी होना चाहिए. So Mitti Social Initiative Foundation is associated with it. So एक NGO है dedicated to providing employment and livelihood
to persons with disability. So how NGOs are playing, we can say, prominent role, and that's how they are bringing a change on the ground level. And provide the jobs or like the compartments which specifically in like जो normal लोग आ रहे हैं वो उनसे ज़्यादा communicate करें so that they can know that they are like not. ये आपकी आवाज लाइक वॉइस ब्रेक हो रही है प्रेरणा, हमें क्लियरली नहीं समझ आया आप क्या पॉइंट बोल रहे थे. I was saying that should be provided jobs like such departments even within the job or the sector. This it involves more of communication so that people can act more with them and understand that they are among us. So Mitti Cafe was started with 0 investment. So again यहाँ पे मतलब multiple important elements है जो reflect हो रहे हैं. Again Supreme Court का जो initiative है, collaboration है, this also breaks down the stigmas around their disability. So they needs to be also seen as equal individuals, equal humans, and it signifies a commitment to promoting diversity. So these are some positive aspects. इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल भी ऐड करना चाहूंगी. दिल्ली में एक कैफे है जिसका नाम है इकोस कैफे, जो कि रन करते हैं सिर्फ डेफ एंड जो म्यूट पीपल हैं उनके द्वारा रन किया जाता है. दिल्ली में ये अकेला ही ऐसा कैफे है. ओके. हाँ मतलब हमें देखने को मिल रहे हैं सच कैफेज कमिंग अप इन दिल्ली या बॉम्बे की बात करो. सो थोड़ा फास्टर पेस पे अगेन हमें ये चेंज देखने की जरूरत है. So Ashik, I think you can take up this editorial. Maria Montessori would have felt amused by Prime Minister of Israel, is resolved to finish off the Hamas by bombing Gaza. So she is a writer, wrote classics such as The Secret of Childhood and Absorbed Mind. So impact of violence बच्चे के माइंड पे क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकता है, जो ऑब्वियसली इट कैन स्टे विद अ चाइल्ड फॉर एंटायर लाइफ. पर्सनल कलेक्टिव दोनों टाइप के जो वायलेंस हो रही है, सेट्स इन मोशन ऑफ साइकिल ऑफ रिवेंज. सो शी मेंशन्ड कि दिस अकॉर्डिंग टू हर ये एक साइकिल है जो रूट कॉज है ऑफ द वॉर का, बिकॉज व्हेन अगेन दे वुड यू नो ग्रो अप एंड जो उनका माइंडसेट है कहीं ना कहीं ये जो साइकिल ऑफ रिवेंज है या ये एलिमेंट उनके माइंड में रहेगा, तो अल्टीमेटली व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स नहीं बन पाते या डेमोग्राफिक डिविडेंड हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, सो लाइक यूथ स्टेज में देन दे एंड अप बीइंग अ फैक्टर causes war, मतलब collectively obviously thousands of children they've been killed also. So humanitarian crisis की हम बात कर चुके हैं, vulnerable to violent roles in future. So resistance mutates into rebellion in many cases when they turn adult. Poverty भी एक factor है that makes children vulnerable to violent roles in future. So UNICEF has also discussed how difficult it is to rehabilitate the children जिन्होंने violence को actually देखा है अपने सामने होते हुए. So एक ये basically बहुत difficult task हो जाता है, and often this is also ignored also. हम बोल सकते हैं कि इसमें इतना emphasize हमें नहीं देखने को मिलता. इवन पोस्ट वॉर जब हम बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए इतना फंड जाएगा, बट ये एक important element है which we often miss. So यहाँ पे भी ये लिख रहा है कि the Israel's leaders they have chosen to ignore this message. So basically ये पूरा आर्टिकल में इसी चीज की बात हो रही है. सो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्रिएट करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्लानिंग फॉर इट, कैसे हम उसको अचीव करेंगे, बट वी ऑफन वी कैन से कि एम्फसाइज नहीं करते या वी डू नॉट कीप दिस थिंग इन माइंड जब हम इवन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की बात करें कि किन के लिए हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं. जो कल भी हमने बात करा था रोल ऑफ वर्कर्स या इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स है, रोल ऑफ वुमेन, उनकी एडवाइस नहीं लेते, उनकी जो कलेक्टिव एडवाइस है वो वी ऑफन मिस ऑन दैट. सो स्टोरी ऑफ जापान ग्रोथ यहाँ पे एज अ केस स्टडी बात कर रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है,
of Japan in today's world, and there is reportedly a death by suicide every 20 minutes. So this is basically showing the contradiction. Despite being the third largest economy, हर 20 minutes में एक suicide का case होता है in Japan. And about 15 lakh Japanese, they have not left their homes for years, which is a form of severe social withdrawal, which is known as hikomori in Japan. So this is again a very contrasting and stark thing कि people have not left their homes for years and years. सो बेसिकली ये बात हो रही है कि एक साइड पे आप एडवांसमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हो, बट वो किसके लिए, उसका इम्पैक्ट हमें इस फॉर्म में देखने को मिलता है. तो ये चीजों को भी हम कंसिडर करके नहीं चलते हैं जब हम सिर्फ ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, बीइंग द रिचेस्ट कंट्री की बात करते हैं, हैविंग द लार्जेस्ट शेयर इन ट्रेड की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए, रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की बात करते हैं. बट अगेन जो डाउन ट्रोडन है, जो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है. जो मॉम एंड पॉप शॉप्स की हम बात करते हैं ई कॉमर्स रेवोल्यूशन हो रहा है, बट इनके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, वी अगेन कहीं ना कहीं हम इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं जापान के. बट 2008 के बाद जो वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, द व्हील्स केम ऑफ द जापानीज इकोनॉमी. जापान की जो पॉपुलेशन है, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग लेस, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ड्राइड अप. सो एक ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, और जो आपके पहले के भी अचीवमेंट्स थे इकोनॉमिक स्फेयर में भी, इकोनॉमिक सेंस में भी अगर हम बात करें, ऑल ऑफ दैट वाज वाइप्ड ऑफ. सो ना तो वो काम आया जो पहले आपने इतने एफर्ट्स लिए, इतने फाइनेंस स्पेंड किए, बेसिकली हम रेजिलियंस पे वर्क नहीं कर पाए. एंड चाइना की बात करें तो इट एंजॉयड अ मैन्युफैक्चरिंग बूम एंड इट डिसलॉज्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी. सो चाइना में हमें कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल क्राइसिस का बेनिफिट देखने को मिला. सो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बूम आया इस टाइम पीरियड के दौरान. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइना में ऐसा क्यों हुआ और जापान में ऐसा इसका ऑपोजिट क्यों हुआ. एंड यहाँ पे एक टर्म है ईगो फ्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. सो ऑन लूजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो जापान में बेसिकली डिस्प्लेड रिमार्केबल ईगो फ्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये जो ईगो वाला एलिमेंट है, चाइना में डेफिनेटली दिस इज प्रेजेंट. अब आप बात करो कि इवन आज के टाइम में हाउ इट इज बिन बिहेविंग, उसकी जो असर्टिवनेस की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस एलिमेंट इज देयर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में नहीं, फॉरेन डिप्लोमेसी में भी. सो एज सुन एज द इकोनॉमी प्लंज टू द थर्ड पोजीशन, जापान की हम बात कर रहे हैं, जापान लीडरशिप पब्लिकली वेलकम्ड चाइनाज एक्शन, मतलब जो चाइना की ग्रोथ थी, बीइंग अगेन अ नेबरहुड कंट्री, जापान एक्नॉलेज्ड जो चाइना में ग्रोथ हुई. एंड दिस इज द केस जब जापान को ओवरटेक करके चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना. So it stated कि sustained demand from the most populous country could only be good for Japan's exports. So यहाँ पे भी they looked for the opportunity और positive thing कि चाइना में अगर ग्रोथ हुई है तो चाइना से जो डिमांड आएगी वो जापान की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जापान के एक्सपोर्ट्स फिर से रीबाउंड कर सकते हैं. सो आज के टाइम में वी सी कि चाइना जो है जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, प्रूविंग दैट इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इट pays टू embrace योर मेन कॉम्पिटिटर. तो मेन कॉम्पिटिटर को आप ईगो की भावना से नहीं देख के, सीइंग एज अ कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटर, दैट रियली हेल्प्स यू. सो ईगो फ्री एक्टिविज्म की बात करो या ईगो फ्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करो, आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करते हैं. सो इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years. हम बात करते हैं $7 trillion इकोनॉमी क्रिएट करने की बात करें इन द नेक्स्ट 7 years. सो इंडिया के केस में भी क्या ऐसी कोई हमें डायकोटमी देखने को मिल रही है या कॉन्ट्रडिक्शन या ऐसी कोई आयरनी देखने को मिल रही है. सो फर्स्ट जब हम बात करते हैं, अगेन ये बहुत बार मैं रिपीट भी करती हूँ, पर कैपिटा इनकम हमारी सिर्फ $2400 है, बट वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. इंडिया रैंक्स 149 amongst 194 countries in 2022.
And since per capita income is keen index of population's well-being, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है अगेन ग्रोथ हुई है, बट उस ग्रोथ ने हेल्प कौन सी क्लास को किया? अपर क्लास को, हाई एंड इंडिविजुअल्स हैं, जो बिग कॉर्पोरेट्स है, बिग टेक कंपनीज है, उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ जो इंडिया ने ग्रोथ देखी है। एंड चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $13,000। सो यू कैन सी कि बेसिकली कितना गैप है इंडिया और चाइना की पर कैपिटा इनकम में। So what is India's per capita income projected to be at $5 trillion इकोनॉमी जब इंडिया ये मार्क क्रॉस कर लेगा? सो उसके कोई ऑफिशियल एस्टिमेट्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला इट वाज ऑल अबाउट पर कैपिटा इनकम, सेकंड इज the nub of the chase to $5 trillion GDP is in distribution। again distribution की हम बात कर रहे हैं या inequality index की हम बात कर सकते हैं। so how the income जो generate हो रही है उसके distribution का हम focus कर रहे हैं, हम progressive taxation की बात करते हैं। so world economics you're seeing कि यहाँ पे again index की बात करें तो 0 से 100 की scale पे markings होती हैं and obviously if the value would be high तो वो indicate करेगा more egalitarian society। So जो अगर हम इस इंडेक्स की वैल्यू की बात करें फॉर बोथ चाइना एंड जापान, सो इट इज मोर देन 50। सो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग की ग्रोथ हो रही है, बट जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है चाइना जापान में दैट इज ऑल्सो मोर इक्विटेबल and these countries they appear to be sharing their economic fortunes more evenly than India। so India में it is we are just having the value of 22 you can say। so यहाँ पे भी हमें improve करने की जरूरत है। तो यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी से क्या मतलब है? इगैलिटेरियन सोसाइटी इन द सेंस जब आप इवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो, हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं, और जो इनकम जनरेट हो रही है अगेन जो मैंने बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो अमंग्स द सेक्शंस जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे इक्वालिटी आप किसी भी सेंस में बोल सकते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब वो जॉब एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं किसको कितनी इनकम मिल रही है। अगर मेल एंड फीमेल दोनों सेम अमाउंट का या सेम वर्क कर रहे हैं बट उनकी फिर पे इक्वल क्यों नहीं है, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी ज्यादा हो रही है। तो COP28 में भी इंडियाज डिमांड और जिस चीज पे इंडिया ने एम्फेसाइज किया दैट वाज अगेन यहाँ पे भी इक्विटी डिमांड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। सो यहाँ पे कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 से वी आर हैविंग दीज conference of parties under it। So sixth assessment report IPCC, every 100 billion according to this, it says कि every 1000 billion tons of carbon dioxide in emissions causes estimated 0.45 degrees Celsius rise in global surface temperature। So this can be noted down, this is important data। So global carbon budget क्या है? Do we have the exact figures for this or not? So again पहले papers पे do we have the actual number कितना global carbon budget होना चाहिए given how we are seeing carbon emissions are increasing, या जो proposed steps है उनकी implementation को we need to take it into consideration and again एक proper budget formulate करने की जरूरत है। and कितना climate finance कौन सी country को जाना चाहिए, कौन वो finance को कौन सी country का proportion ज्यादा होगा। so exact figures पहले for clarity and transparency हमारे पास होना important है, but again we are short of time। and what's responsible for the cumulative global emissions, कल भी हमने methane emissions की specifically बात करी थी, 60% is the contributions because of human activities and definitely it does matter for India also जो carbon budget set किया जाएगा। so the global carbon budget for a given temperature limit is a global resource common to the entire world and India must recognize a fair share of the carbon budget as a strategic national resource whose reserves are depleting rapidly due to overexploitation by the developed countries। So that is why strategically also this is important for India। So what should India's stance be at COP28? क्या stance होना चाहिए इंडिया का? So according to नीति आयोग we see UN development program जो है multi dimensional poverty index की अगर हम बात करें तो India has been able to lift more than 135 million poor people out of the poverty in less than 5 years during this time period।
So this is important data. India has also just extended the food security welfare scheme also, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हम बात करते हैं, इसको हमने और extend कर दिया है. Development is the first defense against climate change. So how long will developing countries, they have to divert their scarce resources, manpower, attention to meeting the global problems created by the developed countries. So again यहाँ common but differentiated responsibilities and acknowledgement जो developed countries नहीं दे रही हैं to their responsibility, that is creating a problem. हम यहाँ बात भी कर चुके हैं कि जो $100 बिलियन का टारगेट सेट किया गया था 2020 से, एनुअली डेवलप्ड कंट्रीज हैड टू प्रोवाइड दैट, बट स्टिल वो एक बार भी हम मीट नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग कि हाउ वी आर जस्ट प्रॉमिसिंग थिंग्स पेपर पे, वी हैव कि ये होना चाहिए टारगेट्स, हम अनाउंस कर देते हैं, बट हाउ एक्चुअली द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इन एक्चुअलाइजिंग देम, वी आर फॉलोइंग शॉर्ट देयर. डीप फेक अलार्म्स वी हैव सीन कि जो बेसिकली डीप फेक्स होते क्या हैं. सो यू कैन साइट द डेफिनेशन. आंचल, डीप फेक्स क्या होते हैं? It is a tool by which audio video changed by the artificial intelligence method that harms the personal information and data of the हाँ, मतलब बहुत people. डिफिकल्ट हो जाता है डिस्टिंक्शन करने में कि क्या ये रियल वीडियो है या रियल ऑडियो है या फेक ऑडियो या वीडियो है. तो इसलिए हम इनको डीप फेक्स बोलते हैं. फेक तो वो होते ही हैं, बट डीप फेक इज दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी. सो इसकी वजह से भी हमें चैलेंजेस भी देखने मिल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. So recently we saw this case जिसमें Indian celebrities, they are highlighting the urgent need for the regulation and safeguards. So in this context हमने बात भी करी है जो fake news के context में, या recently we are seeing that the Ministry of again Electronics and Information Technology, when they are into the conversation की जो regulation है that needs to be implemented. So National Cybercrime Helpline भी है, the number is 1930. So this is important. So you can lodge your complaint on this helpline. Information Technology Act 2000, definitely we talked about this. Copyright Act would again be applicable जब हम deepfakes की बात कर रहे हैं. So awareness और vigilance बहुत important है. Misuse of the generative AI by the humans we are seeing for personal attacks. Dark artificial intelligence, they are being developed every millisecond globally. Every millisecond, dark AI is being developed. So you can imagine how important it is to regulate this technology. So suppose there is a deepfake video which features your digital likeliness was released online. So first step the pundits advise you to do is to report the post to social media platforms where that would be your immediate step. But again, these social media platforms are not legally bound to not only address your grievances relating to cybercrime, but specifically in this case, remove it within 36 hours as well. So they are basically legally bound, जो social media platforms है. So ये एक part of regulation हो गया. And 36 hours के अंदर उसको remove करना भी mandatory है. So high-level meetings have been held on social media platforms, and professors are pioneering in AI to discuss measures to tackle these deepfakes. And recently we saw कि even Prime Minister also उन्होंने भी emphasize किया था कि how it is important to regulate it. So ये कुछ measures हैं जो हम already ले चुके हैं. So क्या हम AI को AI से ही रेगुलेट कर सकते हैं? So कुछ ऐसे AI मॉडल्स हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं to counter these dark AI activities. So we can only hope for more open source tools so as to counter them. So ये part of solution है, like we have the coalition for the content provenance and authenticity. एक open technical standard है which has been created by the coming together for many software companies. So this also aims to authenticate digital pictures. So we can authenticate through this particular platform that we have.